इस्लामिक फंड्स, शरिया कंप्लाइंट फंड्स चूज कर सकते हैं फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्री इंडिया को देखें, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड, दे यूज दैट टाइम टू रियली मार्केट इन्वेस्टमेंट कल्चर विद इन द कंट्री। पाकिस्तान में हमारी फेवरेट इन्वेस्टमेंट इज, आई डोंट लाइक इट, रियल एस्टेट, लिक्विड मार्केट, गोल्ड व्हिच इज जस्ट अ हेज अगेंस्ट फायट करेंसी। करेंसी के लिए करेंसी खरीद रहे हो, Saving the money for their future, अल्लाह planning. ताला ने हमें दिमाग। Absolutely, that's what we tell people. It is very important to have some savings so they have enough capital to sustain that long term अगर requirement है किसी की health maintenance की तो वो how have you come about getting the knowledge that you have now and what actually motivated you to come to this segment, one, and secondly, what's the motivation behind coming and joining Al-Falah with us? Hello, everyone, and welcome to another episode of Stock Talk, where we'd like to talk about a beautiful place called the Pakistan Stock Exchange. Today, I'm really excited. आज का episode थोड़ा different है हमारा format. We have someone very special with us. We have the Chief Strategy Officer of Al-Falah Investments with us, and you guys know I love Al-Falah Investments. Thank you so much for being with us, Mr. Saad. Thank you very much for having me, Masha. Let's begin with an introduction of, so I started working with Al-Falah about a month ago, and you were one of the people that has been kind enough to guide me. So I thought the insight that you bring, because you have how many years experience? 22 now. 22 years of experience, mashallah. And so who better to explain the mutual funds, VPS, index funds, and everything that comes within this to our audience jo itni eager hai to invest. So let's begin by talking a little bit about compounding. बहुत सारे लोग ना confuse करते हैं compounding को compound interest के साथ. तो और बहुत लोग नहीं चाहते कि वो नॉन शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें. तो कैन यू टॉक अबाउट कि जो लोग शरिया कंप्लायंस के मुताबिक और compounding करना चाहते हैं, the difference between compounding and compound interest? Okay. So, first of all, Sharia compliant investments are the instruments that are run based on Islamic principles, right? So we have to be very clear about that. All Sharia compliant mutual funds, whether it's equity or income or money market, they invest into purely Islamic declared instruments and stocks, right? So it has nothing to do with interest, and whatever there is little bit interest in those stocks returns, that is given out as charity. So there is no component of interest in the Sharia compliant instruments. तो जो लोग चाहते हैं कि वो शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट करें, they just choose आराम से Islamic funds, Sharia compliant funds choose कर सकते हैं for their investment. Now, compounding is another concept altogether. Once you invest, only then you can think about compounding your returns, right? And how it works, it's very simple. In layman terms, for example, you invest 100 rupees today at a profit rate or a rate of return of 10% per annum, right? एक साल बाद वो 100 rupees 110 हो जाएंगे. Now, for the next year, you will not be investing 100 rupees, you will be investing 110 rupees. And your 10% return will be on 110 rupees of principal, which will be 11 rupees and not 10 rupees, right? So this is how every year compounding of your annual return takes place, and it creates magic. So for example, if somebody invests 10,000 rupees right now on a monthly basis, and annualized he earns or he or she earns 12% return, and he keeps on doing it for 30 years, he will end up investing only 3.6 million rupees. But his total value of investment after 30 years would be north of 36 million rupees. Wow. So this is 3.6 million investment and 36 million, 3 crore 60 lakh rupe would be the value of investment after 30 years. So that is from as low as 10,000 rupees a month, right? Another example of compounding. If somebody invests, let's say, 3.6 million rupees, which we talked about right now,
for 30 years in a 12% yielding asset, जी. on compounding basis, his value after 30 years would be 107 million, which is more than 10 crores, right? So 3.6 million, which is 36 lakh, to a 10 crore plus key value. This is what compounding does, and you would not even know about it. You would not even बिल्कुल, notice it, बिल्कुल. right? The only thing that is required for compounding is patience, which we generally lack when it comes to investing, जी, right? हम हमेशा फोकस करते हैं on timing the Short market. term gains, exactly. 100x चाहिए, 10x Absolutely. चाहिए, So, अगला साजगार अभी चाहिए. absolutely. So, okay, if somebody has, let's say, 10 lakh rupees right now, from, let's say, 5 lakhs, he wants to do short term investing and, test his luck or test his, knowledge of the equity market and, play around. Fine, do that with partial money. Rest of your money should go into long term investing, which is based on the principles of value investing. बिल्कुल, You know? Benjamin Graham, Warren Absolutely. Buffett. So that's how they generate their wealth or बिल्कुल, create their wealth बिल्कुल. rather than timing the market बिल्कुल. in and out all the बिल्कुल, time. बिल्कुल. तो पाकिस्तान में देयर इज़ अ स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट कल्चर. अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्री इंडिया को देखें, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड, दे यूज़ दैट टाइम टू रियली मार्केट इन्वेस्टमेंट कल्चर Yeah. इन द कंट्री. वहाँ SIPs तो ऐसे हैं जैसे कि एवरीवन नोज, और उन्होंने हर तबके के इंसान के लिए, हर एज ब्रैकेट, हर प्रोफेशन के शख्स के लिए, आप चाहे बिजी हो ना हो, आपके पास टाइम है नहीं है, व्हाट कैन यू अफोर्ड, उसके मुताबिक अलग अलग प्लान्स बनाए हुए हैं. पाकिस्तान में हमारी फेवरेट इन्वेस्टमेंट इज, आई डोंट लाइक दिस, रियल एस्टेट. ओके, इतनी स्लो illiquid मार्केट, गोल्ड विच इज जस्ट अ हेज अगेंस्ट फायट करेंसी, एंड डॉलर. करेंसी के लिए करेंसी खरीद रहे होते हैं. Ajay, so for instance, Marshall, let's analyze the situation in Pakistan. One, Pakistan does not have a savings mindset. Pakistanis do not have saving mindset. Now, there are two reasons. One, the reason goes to take its definition back from the religious sentiments. For example, I understand that I'm Muslim, right? And I understand that after I am gone, there is no need for the money that I'm going to create over here. So what people do is people have greater tawakkul on Allah than saving the money for their future लेकिन अल्लाह ताला planning. ने हमें दिमाग. Absolutely, that's what we tell people. कि Allah Ta'ala tells you Use to your work, brain. exactly, to plan for your future. Yeah. So वो करना पड़ेगा. अल्लाह Yeah. ताला ने कहीं ये नहीं कहा कि फ्यूचर को जो है बिल्कुल प्लान ना करो, कोई चीज़ ना सोचो, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कोई काम ना करो और वैसे ही चले जाओ दुनिया से. No, that And should also, not be if we the... take an Islamic angle, the more you have, उतना ही आप ज्यादा ज़कात दे सकते हैं. Absolutely. उतना ही आप ज्यादा लोगों को हेल्प कर सकते Absolutely. हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स को हेल्प कर सकते हैं, अपने डिस्टेंट रिलेटिव्स को हेल्प कर सकते Instead of consuming everything that you've हैं. generated, Yourself and alone. बिल्कुल, you distribute it. That is our responsibility as a good corporate citizen of बिल्कुल, Pakistan to pay बिल्कुल. back to society. बिल्कुल. The society that is making us earn that money and utilize that money, we have to pay it back. So that is the principle. Secondly, now you see real estate. Real estate has a characteristic of being a physical asset. People find comfort in the fact that they can see and they can utilize that property whenever they want to. And that's why they go for real estate 2 साल investment. कंस्ट्रक्शन में लगेंगे, फिर आपको इलेक्ट्रिकल काम करवाना है, पानी That लगवाना is besides, people, even if somebody goes for an investment mindset, right now I get a plot, 5 years down, if I do not want to sell it, I still have that plot in front of me. Tangible I can do assets. and tangible, very tangible. Although having shareholdings of the company हाँ, वो is भी also tangible है. tangible, but since people can't see it, can't feel it, एक वो वाली चीज होती है ना, कि एक insecurity होती your है कि asset is हमने not in front of educate you. नहीं किया Yes, absolutely. So एक वो भी मसला होता है. Thirdly, real estate में एक limitation है which people don't understand, and that is, for real estate you have to have big sums of money available, right?
High मुझे barriers to entry. मुझे रियल स्टेट एसेट चाहिए, मैं 50 लाख 1 करोड़ से मिनिमम स्टार्ट करूँगा ना. मैं 2 लाख 5 लाख 10 लाख से नहीं नहीं, स्टार्ट और आप कर हर सकता. महीने नहीं डाल सकते. एग्जैक्टली. और मैं वो छोटी इन्वेस्टमेंट, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर Yeah, सकता. unless you come to REITs. Yes, REIT में वो possibility है, but that is something that has still to It's be a work explored. in progress. हाँ, Yeah. it's still to be explored Yeah. in Pakistan. So we will also be offering REIT, but after maybe some time, few Yeah, quarters, yeah. and then we'll come up with Yeah. a fractionalized REIT product, Yeah, right? but in the stock market आप 10,000 रुपए हर महीने, It's 2,000 रुपए, very 500 easy. रुपए. It's म्यूचुअल very फंड्स में easy. तो क्या मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 500 or 100 Yes, rupees. you can start off with the 1,000 rupees and then 500 rupees or 1,000 rupees every month. You can do No every barriers month, to every entry. quarter, every 2 months. It is based on your convenience. You know. Secondly, now you see, if we compare KSE 100 returns for the last 20 years with Yeah. any asset class, Yeah. be it real estate, be it gold, dollar, national savings or government savings or whatever, बिल्कुल stock market has beat them all. बिल्कुल. KSE 100 index, yeah, but it is a story of a long term. There is no short term in stock नहीं, market. नहीं. 3 months, 6 months, 1 year. साथ से पता है वेल्थ बिल्डिंग कभी शॉर्ट टर्म हो ही नहीं Yeah, सकती. absolutely. या तो बहुत ही आपकी अच्छी लक हो और तुक्का आपका लग गया, राइट? यू कांट रिलाई ऑन तुक्कास. And that can be once in a while. Yeah, exactly. 2 times So you're one going to time lose, payout. one time you're ऐसा getting ही a है, tukka. And बिल्कुल ऐसा ही है. so, disciplined approach with patience, Yeah. I think that is the name of the game. एंड अच्छा, बहुत सारे लोग ना व्हेन दे थिंक ऑफ म्यूचुअल फंड्स, उनके दिमाग में मोस्टली मनी मार्केट और फिक्स्ड इनकम आता है. उनके दिमाग में इक्विटी वाले फंड्स क्यों नहीं आते? Okay, so let me tell you, Mashal, this is a very interesting, comment that you have just made. I've been in this industry for 20 years, and generally why people do not come towards mutual funds? Because they think it's risky, and they think it has something to do with stock market. Generally. अच्छा, What you are talking about is generally aware customers. ओके. People who are not aware of what mutual funds are, they relate mutual funds with the stock market, and that's why they shy away from it. हालांकि हमारी 90% That's तो not मनी how it मार्केट is. फिक्स्ड इनकम 90% is में money market, So that's what I tell people. Mutual funds are based on your risk appetite. No matter what risk appetite you have, low risk, medium risk, moderate risk, There is high a risk, fund for you. there is a fund for you. So you can easily pick and choose between what you like, what you do not like, and then you can mix and match. बिल्कुल. For example, in order to get a balanced return, you can choose 50%, 60%, 70% of a money market fund, and rest of the 30 to 50% a stock fund, and invest for a long term. I can tell you, people who are, let's say, who've just started their professional careers, their work or whatever, 25, 26, young generation, 25, 26, 30 years old, they can start building their own a pool by investing as low as 5,000, 10,000 Yeah. from their salary every और आप month. जितना अर्ली शुरू करेंगे उतना आपका उतना ही compounding build up effect. होगा. Warren Buffett, who started investing when he was 13 years Yeah, old, of course. he made 99% of his wealth after the age of 50. That's the power of compounding. कि आपके profits returns दे रहे होते हैं eventually. Absolutely. And eventually majority is your profit giving profit. And what Warren Buffett did was researching himself into which companies to invest in or which business to invest in. Yeah. In form of mutual funds, you or me as a layman, we do not have to go through that exercise altogether. बिल्कुल. Because mutual funds companies are doing that for us. Bilkul. Research people, Yeah. we have qualified investment Yeah. specialists, day in, day out, they're Yeah. making investment decisions. Yeah. All we have to do is just put in our money, Yeah. sit back and relax and forget about it. एंड यूजुअली आपके जो हमारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं, वी अल्हम्दुलिल्लाह बीट द बेंचमार्क एवरी Yes, टाइम. yes. जहाँ पिछले साल द बेंचमार्क फॉर KSE 100 वाज अ हाई बेंचमार्क, 84%. 84%. We did 95% return. Yes, Team Alphala. And I think that is the benchmark of a fund manager. Yeah. That he consistently, or not
even if not consistently, most of the times he beats his benchmark. That's it. And this also works in a गिरती हुई market कि जब market for example 30% down है, आपका fund usually 15-17% down है, तो आप तो बच रहे हैं mutual fund में exposure So the लेने hit is less, Yeah. the returns are higher. Yeah, So that's the, yeah, बिल्कुल. But I would really urge my, younger generation, colleagues or friends to look at it from the angle of long-term savings and investments. That is how we are going to build the investment culture in Yeah. Pakistan. Slow and steady wins the race. Absolutely. And secondly, there is a big need, big requirement to have savings for your retirement. Yes. Right? So We forget that we are human, that हमारी health हमेशा ऐसी नहीं होगी, हमारी energy इतनी नहीं होगी कि हमारी ज़िंदगी में जितना शुक्र करें अल्लाह का कम है कि उन्होंने आसानियाँ दी हुई हैं, बुरा वक्त पूछ आते के हुए देर नहीं लगती. आता. Exactly. तो you have to have something in line just in case something goes wrong, खुदा ना खास्ता. But people are always feeling, youth has a tendency कि आप invincible feel करते हैं. Right? We forget that we will age, we will become slower, your mind will not work as fast. This is when you start. You start early. True. So, and even for those youngsters who are doing their own work, it is fine. You don't need to have a job to retire. You can, start up your own thingy, Yeah. and then you can retire. Yeah. Maybe after 40, after 50, after 45. Yeah. Because the life is not just to work. Oh God. It is to enjoy, to feel relaxed, to feel comfortable. बिल्कुल. So whenever you decide to retire or you decide to take a break, at least you will have some आपके पास वो option तो होगा capital, कि आप break ले सकते हैं. exactly, some savings built up, so that based on that you can take a, let's say, 2-year break and then come back. And for example, you need to take a break for your health. Absolutely. ये चीज़ आपको वो टाइम देगी, या आपको किसी लव्ड वन का ख्याल रखना है. अगर आपके पास सही इन्वेस्टमेंट सही वक्त पे आपने नहीं किया, आपके पास वो पूल नहीं होगा कि आप अपने करीबी लोगों का ख्याल रख सकें लेटर ऑन इन लाइफ, आप उनके लिए टाइम नहीं निकाल सकें. इट विल प्रूव टू बी अ हिंड्रेंस इन योर लाइफ. That is very important. Yeah. And you bring me to another area of cost of health, Yeah. cost of hospitalization. It is continuously increasing and it's becoming very expensive. बिल्कुल. So for anybody like me or anybody like any other younger, our friends, it is very important to have some savings, some capital on your back, so that if anything goes wrong, khuda na khasta, so they have enough capital to sustain that, long term, अगर requirement है किसी की health maintenance की, तो वो हो सके. बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट That's very सर्टेनली. सो बहुत लोग पूछते हैं कि डिविडेंड्स का क्या होता है जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो. आई डिड सम रिसर्च थैंक्स टू आवर टीम, एंड एक तो वो ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट हो जाते हैं, राइट? अच्छा, ऑटोमेटिकली नहीं होता ये कि when you're opening a mutual fund account, you have to give a yes or a no on a dividend reinvestment मैं तो mandate, यस बोला है. right? So either you encash your dividend or you reinvest those But it's dividends. important to reinvest It's important. it for That's how compounding will compounding. come in, na? Otherwise, अगर आप इनकैश करवाते Yeah. रहेंगे, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल Yeah. रहा होगा, बट कंपाउंडिंग का इफेक्ट उसके ऊपर नहीं And आएगा. I think ये एडवांटेज है टू हैव a mutual fund account rather than a stock market account. ये वो तो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में जाता है, फिर बैंक अकाउंट से आपको वापस स्टॉक अकाउंट में भेजना होता है, फिर वहां से आप वापस री इन्वेस्ट करेंगे. म्यूचुअल फंड्स मेक लाइफ वेरी This इजी. directly goes into mutual fund and वो यूनिट से शुरू हो जाते हैं, उसके ऊपर फिर आपका रिटर्न बनना शुरू हो जाता है. So it's as easy. Exactly, most definitely. So बहुत सारे लोगों के ना साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं. दे आर वेरी इंटरेस्टेड क्योंकि आपकी ना ट्रेडिंग की इतनी गेमिफिकेशन हो चुकी है ऑनलाइन. लाइक अगर आप बाइनेंस की ऐप खोल के देखें, it's genuinely so much fun to look at, right? And that's why we've really missed out as a country. हमने इतना बोरिंग बना दिया, हम भूल गए कि हमारी आवाम का वो अटेंशन स्पैन नहीं रहा. और ऊपर से we पाकिस्तानीज क्योंकि एंड पता है इट्स the fault of people like me, like other celebrities, हमारे जो governments रह चुकी हैं, हम इतने धोखे खा चुके हैं इतने बड़े बड़े लोगों से as people कि we don't know who to trust anymore.
जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल बैरियर्स बहुत आ गए इन इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म. लोग बहुत डरते हैं कि नहीं पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. मेरा मानना है कि there's a saying by Baron Rothschild. He said, when there is blood in the streets, buy even if the blood is your own. मतलब कि जब मार्केट गिर रही होती है और जब मार्केट एकदम से कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मार्केट ने हमेशा वापस चढ़ना होता है. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज नेवर परमानेंट. इफ यू कैश इन एट द राइट टाइम, पहले ही हमारे प्राइस मल्टीपल्स इतने लो हैं, ऑन एवरेज 6.5, राइट. ऊपर से मार्केट और भी गिर गई, आपके मल्टीपल्स 4.5 5.5 पे आ गए. गेट इन, बट पीपल आर स्कैर्ड. दैट्स ट्रू. अच्छा, ये एक्सपीरियंसेस भी होता है ना मशल. फॉर एग्जांपल, इफ पीपल हैव हैड बैड एक्सपीरियंसेस इन द पास्ट, obviously they will relate to it and they will say कि यार everybody and anybody is like that. But generally हमारे यहाँ क्योंकि awareness कम है, people don't like to get more knowledge into this in this respect. So that is why they don't get to understand कि exactly how system works. So for example, if somebody does not believe that Pakistan is going to stabilize and Pakistan को कुछ हो जाएगा और default हो जाएगा और सब कुछ, तो फिर तो whatever they are doing in Pakistan, that is going to have the same fate. It's not going to be salvaged. बिल्कुल. मतलब आपका बिजनेस है, क्या करेंगे आप अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया या पाकिस्तान में हालात ख़राब हो गए? आपकी प्रॉपर्टी है, क्या करेंगे आप अगर पाकिस्तान में हालात ख़राब हो गए? So no matter what you're doing in Pakistan, if you are doing something in Pakistan, then you can invest into Pakistani market also. So the fear should not be there then. हाँ, ये ज़रूर है कि अगर if somebody is looking to move out और वो उसके पास opportunity है, तो वो एक अलग चीज़ है. हालांकि मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा दूसरे मुल्कों में you can earn so much. आप कभी जाके cost of living तो देखें. To live a normal middle class life in a city like Toronto, right? You need a minimum of like $4,000 to $6,000 just to get by a month. Yeah. ऊपर से आप बाहर जाके बिजनेस करने की कोशिश तो करें. यहाँ आपको सब कुछ इतना सस्ता मिलता है. सब लोग हमारे मुल्क को बदनाम करने में लगे हुए हैं. The standards that you have to follow, the competition is so tough out there that you don't even. चले आपको स्काईलाइन तो प्यारी मिल गई, ट्रांसपोर्ट आपको अच्छा मिल गया, लेकिन टू बिकम पार्ट ऑफ द एलीट ओवर देयर या टू जनरेट वेल्थ ओवर देयर, पर्सनली आई थिंक इट इज सो मच मोर डिफिकल्ट. हमारे मुल्क में बहुत एडवांटेजेस हैं बिकॉज बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, हमारे इतने खाली एरियाज हैं जहां आप सही टाइम पे घुस गए, दैट्स इट, यू हैव मेड योर लाइफ. ऑलरेडी डेवलप्ड इकोनॉमीज में यू हैव टू हैव एक्स्ट्रा इनोवेशन. कहाँ से लाएंगे आप? अगला चैट जीपीटी कहाँ से क्रिएट करेंगे? And I tend to agree with people who say that there is a limit to the bottom. जी. स्टॉक मार्केट का ना एक बॉटम है. इसी तरह से हर इकोनॉमी का एक बॉटम है. An economy like Pakistan, which is ripe to go in one direction only, and that is upwards. बॉटम टच हो गया है और इससे ज्यादा बॉटम कुछ नहीं है. हाँ, पिछले जो since 2017 to 2023 जो हम बात कर रहे थे, बॉटम कुछ नहीं है. So कहाँ जाएगी इकोनॉमी? इतने सारे लोग हैं. The only way from here is up. Exactly. If anything happens, it will happen for the better. बिल्कुल. So that's what we have to believe in. मतलब otherwise तो हम अगर यही सोचते रहेंगे कि यहाँ से भाई कहीं नहीं जानी इकोनॉमी. 250 million people मतलब अगर आपका मुल्क है तो वो उसको कोई लेट गो नहीं कर सकता इस तरह इतने आराम से. बिल्कुल. चाहे वो इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज हों, आपके इंटरनेशनल कंट्रीज हों जो आपको सपोर्ट करती हैं, कोई इस तरह से लेट गो नहीं कर सकता. यू हैव टू कम अप एनीवेज, बट दैट इज़ वन थिंग. बट अदर देन दैट मेरे हिसाब से तो लोगों का जो फियर है ना, वो जेन्युइन है, बट वो है उन अनरेगुलेटेड सेक्टर्स के लिए जेन्युइन जो कि जिनका कोई सिस्टम नहीं होता. जब आप बात करते हैं ना कैपिटल मार्केट्स की, दे आर रन इन अ वेरी वेरी टाइटली रेगुलेटेड सिस्टम. केवाईसी इतना इंटेंस. केवाईसी तो एक चीज है मशल, आई एम टेलिंग यू अबाउट द रेगुलेशंस दैट म्यूचुअल फंड्स आर बाउंड बाय. हाँ वो तो है. मुझे पता है. सेकेंडली द ट्रस्टी का एलिमेंट,
Yeah. Trustee is very important because trustee is this custodian of assets आप थोड़ा of the समझाएंगे कि investors. ट्रस्टी का जी मैं सिचुएशन. बताता हूँ. देखिए जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है ना, हमारे पास लाइसेंस होता है टू मैनेज म्यूचुअल फंड्स, राइट? Under that license, we can only charge a fee to manage mutual funds, and that is it. The money that investors invest into mutual funds, it is not with us. We are not in control of that money. You know, even you can see it from the fact कि जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा होता है और वो चेक लिख के देता है, तो वो लिखता है ट्रस्टी, सीडीसी ट्रस्टी चेक के ऊपर, और वो क्रॉस चेक होता है. तो वो उस म्यूचुअल फंड के उस अकाउंट में जो कि ट्रस्टी का मैनेज्ड अकाउंट Yeah. होता है, ट्रस्टी का ऑपरेटेड अकाउंट होता है, विच इज सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान, Yes. राइट? सो कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी, बहुत लोग कहते हैं कि यार जब म्यूचुअल फंड कंपनी जो है ना पैसे लेके भाग गई, एसेट मैनेजमेंट कंपनी डिफॉल्ट कर गई, कोई बात नहीं. हम अगर कोई डिफॉल्ट करेगा भी, किस चीज़ के ऊपर डिफॉल्ट करेगा? पैसे ही नहीं है हमारे पास. हम तो इन्वेस्टर्स के पैसे मैनेज ही नहीं कर रहे. वो सॉरी, कस्टडी हमारे पास है ही नहीं, हम तो सिर्फ मैनेज कर रहे हैं. बिल्कुल. मैनेज करने की हम लोग फी चार्ज करते हैं. Yes. दैट इज इट. And minimal fee. एग्जैक्टली, इट इज वेरी थिन मार्जिन. Yeah. सो जब हमारे पास कुछ पैसे पड़े भी ही नहीं इन्वेस्टर के, हम डिफॉल्ट किस चीज़ के ऊपर करेंगे? बिल्कुल. या हम अगर बंद करके भाग भी जाते हैं, इन्वेस्टर का पैसा फिर भी सीडीसी के पास पड़ा हुआ है, वो यूनिट होल्डर का पूरा डेटा सीडीसी के पास पड़ा हुआ है, एज इट इज इन्वेस्टर को वापस मिलेगा. बिल्कुल. सो हम लोग किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन की तरह पैसा लेके कहीं यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं. वी कैन ओनली इन्वेस्ट दैट मनी into the stocks or the instruments, fixed income instruments, or the banks which are mandated by the constitutive document of that particular fund. So Wow. Wow. it's our hands are tied, our feet are tied, basically. बिल्कुल. And SECB takes reporting on a quarterly basis, Yeah. based on which they decipher कि कहीं कोई breaches ना हो. हमारी सेटलमेंट इतनी स्ट्रिक्ट है, हमारी कंप्लायंस Absolutely. इतनी, हमारा रिस्क इतना स्ट्रिक्ट है. वी हैव प्रॉपर डिपार्टमेंट्स Yeah, टू yeah. मॉनिटर ऑल ऑफ दीज And that थिंग्स is जो हमसे all पूछते required, हैं. and that is all required in the NBFC regulations, जिसके थ्रू हमें ये सारे प्रोटोकॉल्स इंश्योर करने पड़ते हैं. बिल्कुल. So I think ये बहुत ज़्यादा regulated और बहुत ज़्यादा protected सेक्टर है. एंड आई थिंक SECP का जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट होता है ना, वो होता है इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना. बिल्कुल. और जो ट्रस्टी है उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करता है. सो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो है वो सारे इस एम्बिट में ऑपरेट कर रही होती है. बिल्कुल. तो म्यूचुअल फंड्स आर वेरी सेफ सेफ इन द सेंस कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूचुअल फंड मनी इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, राइट नाउ. तो वो फियर तो खत्म हो जाना चाहिए कि यार कंपनी भाग जाएगी, कंपनी को Yeah, if that doesn't make you guys feel safe, I don't know what will, because that was the best debate that you could have given for it. So that's, possibly. I hope it works. So अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरी साइड पे. दूसरी साइड पे होता है रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. सिक्योरिटी है वो तो आ गई. अब रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट की या उस एसेट क्लास की अंडरलाइंग नेचर क्या है. वो रिस्की एसेट है या वो लो रिस्क एसेट है. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल, इफ़ यू डू नॉट वांट टू टेक रिस्क, you want to build your savings at a minimal rate with very low risk, you have got money market funds which invest into bank deposits and government securities. That is it. इसी तरह से income funds हैं which invest into bank deposits, government securities including PIBs and corporate bonds which are TFCs, debt instruments हैं. So इसमें कोई volatility वाला उस तरह का रिस्क नहीं है जो स्टॉक मार्केट में आपको फेस करना पड़ता है. Now, if you want to really make money, then stock fund or stock market fund is the जिसका हमारे पास solution दो for you. टाइप्स हैं, कन्वेंशनल स्टॉक फंड एंड इस्लामिक स्टॉक फंड. बिल्कुल. इस्लामिक स्टॉक फंड का भी हमारा बेंचमार्क वाज 70% and 85%. Yeah. So there is a little bit of difference in returns between conventional fund and an Islamic fund. I'm talking about stock market funds, बिल्कुल. right? Why? Because in Islamic fund, you cannot invest into companies that are considered non-Islamic or that are considered to be generating the income from non-Islamic sources. Yeah.
Or even which if they have include- too much debt. Yeah, non-Islamic source, na? Yeah. So which include primarily banks, Bilkul. insurance company, conventional, Yeah. not Islamic. Islamic banks के अंदर you can invest. Yeah. Tobacco But, companies. Yeah, tobacco companies or any other company which has which is very high on debt, and that debt is Yeah. taken from conventional sources and not Islamic Bilkul. sources. Bilkul. So because you exclude some sectors and some companies from the Islamic fund, that is why the return varies. Generally slightly different from क्योंकि आपके पास limited फिर जगह लिमिटेड होती हैं। स्टॉक्स होते हैं, लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल Yeah. होती हैं, लिमिटेड सेक्टर्स अवेलेबल Yeah. होते हैं, राइट? बट अदर देन दैट, अगर आप जैसे मशल अभी बता रही थी कि जो इस्लामिक फंड है उसका भी लास्ट ईयर का रिटर्न वाज 85%. क्लोज टू 85%. और benchmark 70 था। 85% मीन्स इफ यू हैड इन्वेस्टेड 100 rupees on 31st of December of 2023, by 31st of December of 2024 your money would have been 185 rupees. या अगर So, आपने it is 10 that लाख simple. डाले होते आपके पास 18.5 18 लाख होते हैं, बिल्कुल. और अगर आपने यही इनकम यही इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा अमाउंट से की होती तो यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि वो कितना जनरेट करता. बट दिस ओनली हैपन्स वंस इन फ्यू ईयर्स, इस तरह की परफॉर्मेंस. बिल्कुल. जनरली जो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस है वो 20 to 25% एनुअलाइज्ड एवरेज के दरमियान, bad at विच इज़ नॉट बैड एट ऑल. एवरेज एनुअलाइज्ड 20-25% का मतलब ये है कि इन 3.5 years you will double your money. Double it. Simple. You know, so I think it's a great investment avenue. हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं ना वो वैसे ही बहुत लिमिटेड है. You know, 5 lakhs exactly. के करीब हैं इन्वेस्टर्स, which is nothing. 24 करोड़ से ज्यादा की आवाम में. इस वक्त तो आई एम थिंकिंग the younger friends that we have who are doing great with whatever they're doing, you know, their own startups, या even jobs कर रहे हैं, अच्छी organizations में job कर रहे हैं. Anybody and everybody who is earning more than 1 lakh rupees, 150,000, 200,000, ज़ाहिर है starting में इसी तरह की salaries होती हैं, they should be able to allocate at least 10,000 a month into stock मैं तो market कहती for हूँ वो long तो term. मिनिमम आधी डाला कर रहे हैं अपनी. मैंने अपनी बहनों को, आपको पता है, वन ऑफ माई सिस्टर्स इन यूनी, तो अभी उसकी छुट्टी है जब तक वो ग्रेजुएट नहीं करती. बीच वाली जो काम कर रही है उसको तो मैं हर महीने जाके पूछती हूँ, आधा इन्वेस्ट किया? That's very important. It's really, really important. Actually, they also say that the art of investing is to invest first and then spend. That was also Warren Buffett, I आपको think. पता है मैं यही करती हूँ. जैसे as soon as I receive my payments, first is investment, फिर मैं देखती हूँ कि मुझे कहाँ That is the only way of forcibly saving your money. Otherwise, वरना वो तो नहीं आपने बचता. खर्च करना शुरू कर पूरा दिया तो निकल वो जाता तो है. That is the problem. Because तो इसलिए पहले सेव कर ले, छोटा सा अमाउंट जो भी आपने करना है, बट डिसिप्लिन के साथ करें, एवरी मंथ करें, कंसिस्टेंटली करें. बिल्कुल. एंड डू दैट इन अ स्टॉक फंड, इन अ बैलेंस्ड फंड. बैलेंस्ड फंड का मतलब ये आधे स्टॉक में डाल दें, आधे मनी मार्केट में डाल दें, सो दैट यू हैव सम सेफ्टी ऑफ यू नो कैपिटल ऑल्सो. बट अदर देन दैट, this is the way forward for. Acha Mashal, you have been asking me questions. Now taking the liberty, although I know it's your program, but taking the liberty, tell me something about your experiences also. One, your start into the investment, sector. How have you come about getting the knowledge that you have now? And what actually motivated you to come to this segment, one? And secondly, what's the motivation behind coming and joining Al-Falah with us? Okay. I'm really glad you asked that. So it all started when मुझे समझ नहीं आता था, मेरी जेब में जो भी आता था निकल जाता था. And by one point, I had then somehow managed to discipline myself into saving. मैं देखती थी कि जब भी मैं एक चीज़ के लिए सेव कर रही हूँ उसके बाद उसकी प्राइस इंक्रीज हुई, ये क्या मजाक है. So I spoke to one of my friends and he told me about the stock market. I had no idea what the stock market is, किस तरह से आप करते हैं वो वगैरह. So I started doing my research. I started watching shows, documentaries, reading books. I read about Benjamin Graham. I read The Intelligent Investor. मैंने Warren Buffett पे reading करना शुरू की. Then my idols started changing, right? फिर मैं घुसी stock market में, blind. No research on companies, कुछ नहीं पता कि किस तरह से, बस theories के साथ घुसी हूँ, तो वहाँ के पैसा lose किया. अच्छा, I'm the kind of person, when something happens, I need to learn about it, right? So I was like, अच्छा, चलो ये तो हो गया है.
how do I fix this? Then I started doing proper research, understanding, watching different videos, reading more in depth कि किस तरह से analysis होता है. I learned about technical analysis, then I learned about sentimental analysis, and then of course the most important fundamental analysis. And aista I started getting better at it. I started getting the hang of it. I understood कि ट्रेडिंग बहुत रिस्की है लेकिन इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म अच्छी है. आई स्टार्टेड बिकमिंग अ स्विंग ट्रेडर एंड देन इवेंचुअली मूव टूवर्ड बीइंग अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. एक दफ़ा आई गॉट द हैंग ऑफ कि अच्छी कंपनी स्पॉट कैसे करनी है एज अ ले मैन, राइट? बट एसेंशली माई मोटिवेशन बिहाइंड डूइंग ऑल ऑफ दिस इज़ कि आई हैव जस्ट always been the kind of person I enjoy being of service to people, right? And मुझे हमेशा कोई ना कोई higher cause चाहिए होता है. मेरे लिए ये बहुत shallow existence है कि आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए जी रहे हो and you're not making a difference to the world. I want कि I genuinely think कि हमारे मुल्क में इतना potential है for people to exit generational poverty. मुझे कभी ये चीज़ हज़म ही नहीं हुई कि मुझे ज़्यादा opportunities मिलती हैं क्योंकि मैं एक अच्छे like well to do घराने में पैदा हुई. How is that fair? कि बस क्योंकि I was lucky enough to be born into a family, तो I had better education, I had better opportunities, मेरी life standard ज़्यादा बेहतर था. मुझे कभी ये चीज़ समझ ही नहीं आई और मुझे हमेशा अंदर से खाती थी चीज़. I don't like seeing people in pain as a whole in general. Then I by mistake came on a podcast. मेरे दोस्त मूर्ति का, and he was like कि तुम हर वक्त करती रहती हो स्टॉक मार्केट, तो आके कर लो मेरे शो में. I think it was more by luck than by mistake. Yeah. And so I came and people liked it and people started showing interest in investment. I was like, wait, is this a way that I could possibly help people gain control of their lives? Is this the moment I've been waiting for my whole life? So, and at the same time, I was kind of moving away from the way that my life had been the previous years. क्योंकि हर इंसान ग्रो करता है, हर इंसान के गोल्स चेंज होते हैं, आप बड़े होते हैं, आपका दिमाग खुलता है. And I started thinking more along the lines of investment. वो चीज़ manifest होती रही मेरी ज़िंदगी में. Then along the line, a lot of companies started contacting me, right? और मैं थकना शुरू हो गई because a lot of them were very scammy, कि हमारे साथ पैसे इन्वेस्ट करें और हम आपको पैसे कमा के दे देंगे, like these individuals without licenses. और मुझे ये चीज़ हज़म नहीं होती थी, even though they offer you big sums of money. लेकिन मेरे लिए वो चीज़ acceptable नहीं थी कि आप बस थोड़े से पैसों के एक्सचेंज के लिए आप एक ऑडियंस को मिसलीड कर रहे हो, who's depending on you, right? And तो I kept meeting different companies, नहीं अलाइन हो रहा था. बाबे बैठे हुए थे जिन्होंने अपने वेज ऑफ थिंकिंग नहीं चेंज करने थे, जिन्होंने अपनी अप्रोच नहीं चेंज करनी थी, जिनकी इंटेंशन के पीछे मुझे कोई ऑनेस्टी नहीं नज़र आती थी, मुझे सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नज़र आता था. एंड इवन आई अंडरस्टैंड दैट, आई अंडरस्टैंड एवरीवन इज रनिंग अ बिजनेस, दे हैव टू, but there has to be something bigger than that behind The it. purpose. There has to be a purpose that is Absolutely. bigger than money. Money comes and goes. That's part of life. पैसा तो आएगा जाएगा, not a problem. There has to be something altruistic. आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, आप चीज़ें चेंज करना चाहते हैं. Why do people like certain politicians better? क्योंकि उनको फील होता है कि they care about them, right? तो I got called in by Alfala. मैंने सोचा कि फिर से एक वही मीटिंग जो मैंने बोलना है, सर माजरत, थैंक यू सो मच. Let me take this point of yours and tell the audience, your audience, that at Alfala, our vision, our purpose is to help build futures. Yeah. Exactly. So that is our purpose, and rightly so. Continue. Yeah, तो then I started meeting you guys, and पहली मीटिंग के लिए आई, I was like, अच्छा, everyone's really different here. एक तो मैंने पहली चीज़ नोटिस की, मैनेजमेंट थी यंग, okay, a young CEO, a young CIO, a young CSO, like everyone is young. And then I looked around the office and I was like, everyone's really young, they're in their 20s. ऊपर से मैंने जो आप लोगों से बातें की थी, you people were so honest with me. You were honest about your motivation, about what you want to do, and you guys approached me with the intention कि हमने awareness फैलानी है. You guys didn't approach me with the intention के customers ला के दो. business increase करना है. You were like Yes, overall industry की हमने awareness फैलानी है, हमने industry को expand करना है, हमने अवाम को लाना है toward investment क्योंकि उन्हीं का फायदा है. Then we started speaking about कि अच्छा, should we just like make a different arrangement? Then you guys asked me कि मेरी intention क्या है, what I want. So I was like कि I want to learn.
you guys were like, we can help with that. And I was like, I can help you raise awareness. And then we've joined hands, and me and Alphala Investments been besties ever since. So that's the story with me. Glad to have you on board in our team, and I think we can create great Acha, value what's it for like our having me at the office? So, let me tell you, since I am also looking after HR over there, so we are in the process of, or we are in the phase of building our team, Yeah. right? And obviously, we have recently launched our management trainee program. So we are actually attracting good minds, intelligent minds, and young people to come and join our team, right? Because for the future, we can't just keep operating with the babas like me or No, you're anybody not a else. Baba. You don't count as a Baba. So, we have to have young lot who can Yeah. take this company, take this business forward, Yeah. and who can be the future leaders who, actually know what the rest of the population of their age, how they think, how they behave, what they feel like, and who they like to do business with, Yeah. rather than people sitting in their late 50s and Yeah. 60s and doing business and guiding young people to invest without knowing and without understanding what they feel. So, so that is the kind of culture that we are trying to build in. Now, when you came in, obviously you already have a brand. Okay? You are already known. You are already followed by people. So that is why we thought this is going to be a great combination to actually do what we want to do, Yeah. create awareness and bring people into the investment ambit within Pakistan, Yeah. and start believing in the asset classes that we offer Bilkul. within this country, Bilkul. and the returns that we can make or we can generate for people for their futures. So I think it was a great combination that we saw by you joining the team, Yeah. and I think here we are. मैं थोड़ी स्माइली भी रहती हूँ ना. Even if I'm That's a- walking to the bathroom, I'm just like That's happy to be here. That's a bonus. That's the bonus value that we've got in your shape. Like a mascot. So, yeah. Well, thank you so much for being with no. us. I really appreciate it. हफ्ते में तो हम बहुत busy होते हैं because we're too busy managing money and making moves. But I'm really appreciative of the fact that आपने Saturday को time निकाल के you came here. Especially we woke up pretty early today so that we can manage But this. the pleasure was mine, and I hope this podcast goes a long way in terms of creating the clarity that we wanted in the minds of people with respect to mutual funds, with respect to investments, and with respect to planning for their own futures and for their own selves. Most definitely. Well, thank you so much. And Thanks for you. And I am going to see you guys in the next episode where we have more lovely conversations about the stock market, about different asset classes. Take care. Bye.